स्टरलाइजेशन। अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टर्मिनेट किया जाए तो उसको हम फीमेल स्टरलाइजेशन बोलते हैं। और वुमेन हु डू नॉट वांट मोर चिल्ड्रन एंड with medical problem, also called tubal sterilization, tubal ligation, voluntary surgical contraception. Most widely used globally, 210 million couples and 28% in the US. Not popular in Ethiopia, only 0.1% occlusion of the tubes in some form. पोमेरोय मेथड्स देख सकते हैं हम इसके अंदर। पोमेरोय मेथड्स के अंदर जो हमारी ट्यूबल है उनको लाइगेट किया गया है। टाइमिंग क्या होती है फीमेल स्टरलाइजेशन की? एट द टाइम ऑफ सिजेरियन सेक्शन, पोस्टमार्टम मिनी लेप्रोटमी, इंटरवल मिनी लेप्रोटमी, कंकरेंट विद प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। मेथड्स ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन: एब्डोमिनल लेप्रोटमी या मिनी लेप्रोटमी, वजाइनल लेप्रोस्कोपी, स्कोपिक, हिस्ट्रोस्कोपिक, डिफरेंट सर्जिकल अप्रोचेस। Mini laparotomy for tubal ligation. Ligation of the fallopian tubule through 3 to 4 centimeter incision on the abdomen can be done as an outpatient procedure by local anesthesia and sedation. Mini laparotomy following vaginal delivery. Enlarged uterus tubes in the mid-abdomen, 3 to 4 centimeter subumbilical incision. Interval mini laparotomy, short transverse suprapubic incision, uterine elevator used through the vagina. Indications to delaying tubal ligation: current pregnancy less than 6 weeks, postpartum, severe postpartum or post-abortion complications, unexplained vaginal bleeding, pelvic inflammatory disease and STIs, pelvic malignancies. Benefits of female sterilization: no known side effect, helps to protect against unwanted pregnancy, nothing to remember and no worries about contraceptives, again prevents against pelvic inflammatory disease, may protect against ovarian tumor. रिस्क क्या होते हैं हमारे फीमेल स्टरलाइजेशंस के लिए? फ्यू कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड विद सर्जरी, एनेस्थीसिया, प्रीवियस सर्जरी, पीआईडी, ओबेसिटी एंड डीएम। किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, पीआईडी, ओबेसिटी हो सकता है, डीएम डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, 1-2 डेथ होती है हमारी, ठीक है, 1 मिलियन पर केसेस, 2 प्रेगनेंसीज पर 100 वुमेन ओवर 10 years. Possibility of future regret, young age, lost child, few or no children, not married, marital problems. Counseling on female sterilization. Counseling is a critical. Potential risk, benefits, possibility of later regret, possibility of pregnancy, most ectopic. Summary: permanent methods are irreversible. Non-scalpel vasectomy in man, mini laparotomy for women are preferred. Permanent methods are less popular in Ethiopia. Detailed counseling is essential. Rare complication not related to method. Case study: 20-year-old woman come to your clinic for family planning. She and her husband decide that tubal ligation is best for them. The couple has 1 child. What important issue would you like to raise during the counseling? Take 3 minutes to reflect. Considerations in the case: check if it is well thought through, discuss the possibility of future regret as the method is irreversible, mention other alternative family planning methods.